नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के नेटवर्क की इस विशेष कवरेज में। एनडीटीवी के तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। एनडीटीवी 24/7, एनडीटीवी एमपी, एनडीटीवी राजस्थान और एनडीटीवी इंडिया का खास तौर पर खबरों की खबर आप देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी राजेश से कि कैमरे को मुझसे दूर और आगे लेके जाएँ और पहली बार लाइव प्राइम टाइम में आप एनडीटीवी के कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं ये भव्य राम मंदिर। हम लोग प्रीमाइसेस में मौजूद हैं और आरती, पहली आरती शुरू हो गई है। मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं ताकि आप आरती की आवाज़ सुन सकें। शंखनाद हो रहा है, आरती की घंटियां बज रही हैं, लोग बाग गीत गा रहे हैं। ये सब आप लाइव देख रहे हैं एनडीटीवी पर। राजेश, जरा ध्वजा दिखाई जाए, ऊपर लेके जाएं कैमरे को और इसकी भव्यता को दिखाएं, इसकी सुंदरता को दिखाएं। नागर शैली का बना हुआ ये मंदिर राम लला की, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर आप पैन करेंगे जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जगह थोड़ा सा राइस पे है। यहीं पर सुबह तमाम वीवीआईपीज बैठे हुए थे और इसी मंच पे राजेश अगर पैन करेंगे वो पोडियम आपको दिखाई देगा, जिस पोडियम पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह भाषण दिया, योगी जी ने भाषण दिया, भागवत जी ने भाषण दिया। उस मंच पे हम मौजूद हैं और सामने वो कुर्सियां लगी हुई हैं जहां पे तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े महानुभाव वीवीआईपीज मौजूद थे, साधु संत मौजूद थे, कार सेवक मौजूद थे, व्यापारी जगत के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, फिल्म स्टार्स मौजूद थे। और देखिए, दिवाली का मौसम है, दिवाली चल रही है, पटाखे छूटे जा रहे हैं, आतिशबाजी भी शुरू हो गई है और ये सब कुछ 9 बजे पे टाइम के प्राइम टाइम में बिल्कुल प्लान हुआ है। सामने की ओर मुख्य द्वार आप लोग देख रहे हैं, मुख्य द्वार से वहीं से एंट्री हो रही है। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। मेरे सहयोगी राजेश पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो करीब 60 डिग्री टेम्परेचर और हवा तेज चल रही है। उसके बीच में ये लाइव कवरेज आप देख पा रहे हैं। ये प्रांगण है जो अभी तक हम लोग जो ऑफिशियल पिक्चर्स रिलीज होती थी, वीडियोस रिलीज होते थे, उसके ज़रिए आप लोग को दिखाते थे। आज पहली बार कैमरे यहाँ पहुँचे हैं, अपने अपने कैमरों के ज़रिए यहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और द्वार पे आप देख सकते हैं सिंह बने हुए हैं, प्रभु हनुमान की स्टैचू है। यहाँ देखिए, ये देखिए, प्रभु श्री हनुमान आपको दिखाई देंगे, उनके आगे सिंह है, ऐसे लाइन से गरुड़ है उसके आगे। ये तमाम जो नागर शैली का जिसकी स्थापना की गई थी वो तमाम चीज़ें आप देख पा रहे हैं। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कहूँगा राजेश को कि राजेश आप घूम के इस तरफ आ सकते हैं। और ये इतने लोगों के बैठने का इंतज़ाम था। देखिए, मेरे लेफ्ट से लेके मेरे राइट तक अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए थे। अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग तरह के लोगों को, उनकी किस कम्युनिटी से हैं, वो किस कम्युनिटी किस विधा से वो आते हैं। कम्युनिटी का मतलब मेरा वो था, उस विधा के लोगों को एक साथ बिठाया गया। फिल्म स्टार्स एक साथ थे, साधु संत एक साथ थे, कार सेवक एक साथ थे। और ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं राम लला के उस भव्य मंदिर से, जिसका पहला चरण पूरा हुआ है और आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, पूरे वैभव के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, पूरे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसे लगा कि हम लोग जैसे चला गया, आतिशबाजी होती है, चली जाती है, ऐसे लगा कि वापस त्रेता युग की ओर देश लौट रहा है। और उस त्रेता से जो चीज़ें सीखी हैं वो कैसे कलयुग में अपनाई जा सकती है, कलयुग को कैसे त्रेता में बदला जा सकता है, वो तमाम चीज़ें आपने देखी आज सुबह के कार्यक्रम के दौरान। भव्य कार्यक्रम रहा, भव्य आयोजन रहा, भव्यता के साथ उसको दिखाया गया। इन सब के बाद में, इन सब के बीच में आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, अभी तो हम बाहर खड़े हैं, मैं प्रांगण में नहीं हूं, लेकिन अब से कुछ मिनट पहले मैं और मेरे सहयोगी सचिन उस वक्त मेरे साथ थे। हम अंदर गए मंदिर के, और मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हैं, कैसी चीज़ें बनी हैं, क्या किस तरह की कलाकृतियां हैं, कैसा गर्भगृह है, किस गर्भगृह में बैठ के कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की, और राम लला कैसे दिखाई देते हैं, आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रभु श्री राम के दरबार में अब एनडीटीवी आपको लेकर आ गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस दर्शन कराने के लिए। क्या तैयारी यहाँ पे की गई है, किस स्तर का मंदिर देखा आपने, तस्वीरें बहुत देखी होंगी आपने जो रिलीज़ की गई ऑफिशियली। अब कुछ लोगों के लिए अलाउ किया गया है, खासकर वो लोग जो बाहर से आए हैं, वो लोग जो मीडिया के लोग हैं, कुछ वो वीवीआईपी जो बाहर से दर्शन करने आए थे, उनके लिए इस वक्त अलाउ किया गया है। आइए अंदर चलते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है।
ये हम गर्भगृह की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं चाहूँगा ऊपर दिखाइए, सजावट को दिखाइए। एनडीटीवी के कैमरे पर प्रभु श्री राम लला का जो दरबार तैयार हुआ है, ये पहला गर्भगृह का पहला गुंबद है। उसके नीचे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और नागर शैली में इसको बनाया गया है जैसा कि आपने देखा। और उसके बाद अब ये जगह जगह पर सजावट है, फूलों से सजावट की गई है। आप ये नक्काशी देख सकते हैं, देख रहे हैं, प्रभु की तस्वीरें हैं, हर जगह जगह दीवार पर बनाया गया है। प्रभु श्री राम की ओर आगे बढ़ते हैं, सचिन मेरे साथ चल रहे हैं। अब हम ये सेंटर में आ गए हैं। ये इसका मेन गुंबद जो है उसके नीचे का है ये सेंटर पार्ट। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जब आम जनता आएगी तो उसको ऐसे ही दर्शन करने को मिलेंगे। और आप ऐसे दिखाइए, वो देखिए प्रभु श्री राम रामलला के दर्शन यहाँ से होते हैं। इतनी दूर से भी दर्शन सुलभ हैं। जब ये भीड़ होगी, जब ये आएंगे लोग, तो आप यहाँ से देखेंगे। और ऊपर स्क्रीन भी लगी हुई है, उस स्क्रीन के आगे अभी तो फूल हैं, वो जब वो स्क्रीन से भी दर्शन हो जाएंगे। जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे वो लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए प्रभु श्री राम के सीधा सीसीटीवी है, उसकी तस्वीर देख मिलेगी आपको यहाँ पे। और वो सामने, बिल्कुल सामने, दूर से भी दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, अब हम और आगे आ गए हैं। इस वक्त हम बीच में हैं और अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हम आगे की ओर जाते जा रहे हैं। क्या होगा आगे आप देखते हैं। आइए चलते हैं गर्भगृह की ओर, और जहाँ पर मूर्ति हुई, प्रार्थना हुई, और बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी बहुत हैं। ये लोगों में उत्साह है, ये देखिए आप। सचिन, मीडिया, सचिन आइए। सचिन आप आगे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा हाथ यहाँ पे है। हाँ सर। अब दिखाइए, रामलला को दिखाइए। सचिन आगे आइए, हम सबसे आगे हैं, यहीं से दर्शन होंगे। वो गर्भगृह का बीचों बीच जहाँ पे रामलला की पूजा अर्चना हुई, इसी गर्भगृह में 5 लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये हुआ। आगे अगर आप देखो, छोटे पुराने वाले रामलला भी हैं। अगर आप दिखाओ, नीचे फोकस करो, बीच वाली पुराने जो रामलला थे, जो अस्थाई टेंपल में रहे, टेंट में जिसके बारे में कहा जाता है, वो नीचे हैं। और ऊपर की ओर पूरी तस्वीर जो है वो रामलला को आप सीधे इस वक्त एनडीटीवी पर देख पा रहे हैं। इसी की आज गर्भगृह में स्थापना हुई है। ये प्रभु श्री राम के लला के दरबार में हम लोग हैं, नारे लग रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी हैं। कहाँ से आई हैं? दर्शन हुए? हाँ। दर्शन करने आई हैं? हाँ, दर्शन। आपके मन तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया, दर्शन हो रहे हैं, दर्शन चलते जा रहे हैं और यहीं पे चल रहा है। जीवन धन्य हो गया, ये लोगों की वाणी है। ऊपर दिखाइए सचिन, ऊपर दिखाइए, सबको दर्शन करने दीजिए। सबके दर्शन करने का मौका है, हर व्यक्ति दर्शन करना चाहता है। और बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग अयोध्या से बाहर से आए हैं, वो सब भी प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं। अभी आपने एनडीटीवी पर उनकी साफ बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें देखी उसी गर्भगृह की, जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। अंदर जैसे कि हमने बताया, नागर शैली में इसको बनाया गया है, इस पूरे मंदिर को। और सचिन का एक बार फिर लगता है कि उनको प्रभु श्री राम को देखने का मन कर रहा है। रामलला के दर्शन हो रहे हैं। ये कमाल है, ये कमाल है। यहाँ का पब्लिक जो है उसका उत्साह में कोई कमी नहीं है। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं, तो ये आपने दर्शन करे। ये हम लोग कोशिश कर रहे थे पूरे दर्शन आपको कराने की। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जी? कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक हरियाणा से जी। रोहतक हरियाणा। हो गए दर्शन? हाँ जी, हो गए जी। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था यहाँ तक पहुँचेंगे। धीरे धीरे कर अब यहाँ पे लोगों का, भक्तों का तांता जो है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और दर्शन किसी को मिले, किसी को नहीं मिले। और उसी के बीच में ये देखिए, ये वो लोहे का परत चढ़ा हुआ दरवाज़ा, जिसके बारे में आपने स्टोरीज काफ़ी देखी होंगी एनडीटीवी पर। और अब हम धीरे धीरे से बाहर निकलते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं। बड़ी संख्या में अंदर लोग हैं। जितने लोग बाहर से आए हैं उन सबकी इच्छा है कि एक बार जाने के पहले रामलला के दर्शन हो जाएं। कुछ सफल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, भीड़ है, भगदड़ है। और इसी के बीच दर्शन हुए आपके? कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? हम बिहार से आए हैं, बहुत 3 जगह। तो ये पब्लिक में उत्साह है। और इसी जी 3 जगह गाड़ी से बच गए हैं।
राम लला के दर्शन हो हाँ, गए ना? दर्शन अंत भला तो सब भला, सब भला सब भला। अंत भला तो सब भला। ये इतिहास बनने वाली तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक पल है। उस ऐतिहासिक पल का हर कोई यहाँ पर साक्षी होना चाह रहा है। ऊपर से मैं कहूँगा इधर पैन करें अगर अपने लेफ्ट की ओर सचिन, तो हम दिखा पाएंगे कि यहाँ क्या तैयारियाँ थी सुबह। ये देखिए ऐसी स्क्रीन्स लगी हुई थी और वो चेयर्स अगर आप देख पाएंगे, थोड़ा और लेफ्ट पैन करेंगे जब धीरे से, तो पता लगेगा। उधर तमाम VVIPs जो थे, जो देश के गणमान्य लोग आए थे, साधु संत आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, उनके बैठने का इंतज़ाम था। वो सफ़ेद कुर्सियाँ आपको वहाँ दिखाई दे रही हैं। ये पूरा इंतज़ाम था। अयोध्या पूरी बदली सी दिख रही है। और पीछे देखिए वो मुख्य द्वार के ऊपर का गुंबद है, उसके पीछे लेज़र चल रहा है। ये सब तैयारियां यहाँ पर देखा गया। एक अगर हम इसकी परिक्रमा कर सकें आगे चलते चलते, तो वो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं उनसे हम बात भी करते जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा शानदार बनाया है। ऐसे लग रहा है इमोजी बनाई है, स्माइलिंग इमोजी जिसको बोलते हैं ना, राम लिखा हुआ है। ये एक नया ट्रेंड है, आजकल इमोजीज का ज़माना है। और इमोजीज के ज़माने के वक्त में राम के चेहरे के साथ मुस्कुराहट जो है, वो स्माइलिंग इमोजी जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे ही फूलों से सजा हुआ है। लेकिन अभी तो दर्शनार्थियों के लिए खुला है ये पूरा मंदिर का प्रांगण अगले कुछ दिनों तक। लेकिन जब द्वितीय चरण का कामकाज शुरू होगा, अभी तो इसमें 3-4 मंजिल और बननी है, उस वक्त कैसे दर्शन कराए जाएंगे, क्या इंतज़ाम किया जाएगा, काम भी चलता रहे, दर्शन भी होते रहे, वो भी देखना होगा। ये देखिए तस्वीर देखिए, हनुमान जी है, बजरंग बली हाथ जोड़े हुए। जैसा कि आपने सुना होगा, जगह जगह भगवानों की तस्वीरें हैं। और प्रभु श्री राम का जिक्र तो हनुमान के बगैर अधूरा ही रहता है। इसीलिए अयोध्या में हनुमान गढ़ी भी है। और अब राम लला का यहाँ पर ये शानदार भव्य मंदिर भी हमको दिखाई दे रहा है। राम लाला बैठ गए अब अपने भवनवा। हे अपने भवनवा भैया, अपने भवनवा। राम लाला बैठ गए अब अपने भवन। Special broadcast from Ram Ki Paddy. The music is on and so are the colors. This is a special आरती. आपका नाम क्या हुआ? यशवंत राजपूत गौड़, जहां जिला सागर मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश से आए और ये इतनी डिफिकल्ट आरती करते हैं आप? ये स्वयं माता रानी की कृपा है और जिसमें श्री राम की कृपा है। 2 महीने से हमारा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें श्री राम जी ने खुद ऐसा हमारे लिए आवास किया कि ये नई आरती हमारे लिए प्रस्तुत आपके लिए करनी है। तो कल हमने हमारे गौर झामर में आरती करी थी। उसके बाद स्वयं श्री राम जी की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग 4 लोग यहाँ पर आए और किसी ने भी हमारी गाड़ी भी नहीं रोकी, ना किसी ने हाथ दिया और सीधे रामचंद्र जी के यहाँ पर आ गए। ये सब में बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं। हमारी आरती होती है कम से कम 5 साल से हम आरती कर रहे हैं। 21 प्रकार की हम आरती करते हैं और मध्य प्रदेश में सब जगह हमारी आरती हो चुकी है और उसमें कभी 1 रुपया किसी से लेते नहीं, ये काम निःशुल्क चलता है। Thank you so much. Thank you. And we have Amish Tripathi also with us. And Amish, you went inside the temple premises and that's where my colleague Tanishq is. Tanishq, coming to you first, give us a sense of what does it feel to be inside Ram Mandir? Maria, it is majestic. Well, the majesty of it, the beauty of it, I would like to show you the temple from inside. This is NDTV giving you live view of the temple from inside. We have just entered the temple and this is the Nagara style of architecture everybody has been talking about. This is the traditional Nagara style and has the length of 380 feet and a width of 250 feet. This is the Ram Temple premises. I am inside the Ram Temple and if you would just like to show you from inside, these all flooring is of marble. Marble flooring here has been done and you can see the beautiful architecture, marble architecture. All of this is Nagara architecture that has been done here. This is inside the Ram Temple premises. Behind me was where the VIPs were seated. But now if you see the grand entrance of the temple, as you can see the majestic 350 feet tall Ram Temple here. Inside of this is the Ram Lalla's idol and you can see people thronging here, coming over here. This is the Ram Mandir, devotees coming here, media persons coming here. This is the Ram Mandir and this is the ground floor, the base floor of it. It's going to be 1.5 floor also above this. I would like to give you a close look of inside the temple, the architecture that has been designed here in the Ram Mandir. There have been gods and goddesses sculpted on the pillars and this is made to withstand almost 1,000 years with no use of iron or steel rods. This is the architecture here at the Ram Mandir. A lot of people are thronging here. I would just like to give you another view. The flooring is completely of marble and there are plants kept aside and it is, of course, since it was the Pran Pratishtha ceremony today, it has been decorated all with flowers. It has been decked up and this is where today the Pran Pratishtha happened. This is the inside. NDTV is giving you inside view of the Ram Temple here in Ayodhya, and which saw more than 8 to 10,000 people here witnessing the Pran Pratishtha ceremony. Many of them were celebrities, many of them were politicians, a lot of VVIPs coming here for the ceremony. But I could give you a clear view of how Ram Mandir is looking from inside. People are still coming, people are still thronging here. People are very excited, especially the people of Ayodhya. A lot of people, a lot of saints, a lot of mahants here. आपका नाम सर? मैं अरुण बिसेगांवकर पूना से हूँ। प्राण प्रतिष्ठा विधि के लिए आया था इधर। प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या हुआ था? प्राण प्रतिष्ठा विधि के लिए बताएंगे। लगभग 16 तारीख से ये विधि हो गए थे। 16 तारीख से आरंभ हो गया था, प्रायश्चित आदि विधान सब हो चुका। आज पंतप्रधान मोदी जी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हो गया। तो कितने महंत इन्वॉल्व थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए? कितनी देर ये कार्यक्रम? सभी जगहों से महंत आए थे और जो योग्य व्यक्ति थे, जिनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी 11 दिन तक अनशन किया, फिर प्राण प्रतिष्ठा विधि के लिए वो आए। अब प्राण प्रतिष्ठा के आगे का क्या कार्यक्रम है? मैंने सुना इसके बाद भी कुछ विधि होने वाली है। अभी और कार्यक्रम तो चलते ही रहेंगे। वेद पारायण चलेंगे, चारों वेदों के पारायण चलेंगे, कुछ हवन चलेंगे, सोमयाग चलेंगे,
जो भी इसके विधि है वो तो होते ही रहेंगे। आप जरा हमको बता पाएंगे इन पिलर्स पे क्या क्या किन किन भगवानों की मूर्ति अलंकृत की गई है? अभी ये शंकर भगवान की है। अलग अलग मूर्तियां है, जैसे अष्ट जो कोण है, प्रत्येक कोण की देवता है। ऊपर गणपति है, हाँ, ऊपर भी एक देवी का चित्र है। सभी देवता जो है पुराण में कहा गया है, उनकी जो सभी मूर्तियां हैं इसके ऊपर है। तो ये हर अंदर तक पूरा ये मूर्तियां बनी हुई हैं। अंदर तक सभी जगह सभी इसके ऊपर है मूर्तियां सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो एज वी स्पोक टू द महंत हु वाज अ पार्ट of the Pran Pratishtha ceremony, I'm just entering more deeper inside the temple. This is how it looks from inside. This was the initial first few steps, but I would like to give you the majestic view of the top of the Ram Mandir. I would like to give you the majestic view of the top of the Ram Mandir. You can see over here how beautifully it has been carved, and no iron or steel rods have been made. I would like to ask my camera person to move to the center and give you a center view of this whole place. This is the beautiful Ram Mandir that has been constructed by L&T in the last 18 months and was finally inaugurated, and the Pran Pratishtha was done today. I would also like to step inside a few steps, and you can see over there the gold plated doors that have been installed here at the Ram Mandir. These are, as you can see, if my camera person could just zoom in, those are the gold plated. We'll try to get a closer look of the gold plated doors. But yes, so many pillars here, all have been carved by, see, Lord Krishna here, Lord Saraswati, Goddess Saraswati, all Hindu deities, all Hindu gods and goddesses here. But these are the gold plated doors. You can see over there the gold plated doors here. Again, here that were installed here, that were put here a few days back. These are the gold plated doors, and you can see people here thronging. Two elephants have been made, and this is the view. Welcome back, and let's continue this conversation now with someone who was inside the temple premises just minutes back, Amish Tripathi. Welcome. What was it like? Oh, it was wonderful. So, and the first thing that strikes you is the massive infrastructure improvement. I actually shot a documentary here a few months back, which will be coming out on NDTV on 25th Jan, 7:30 p.m. I didn't think how it would be completed. Right, the Ram Janmabhoomi road was still being broadened. Now it was all completely done. The structures have been painted. Then what happened was at the gate itself, the wonderful flower arrangements for the welcome gates. It was so beautiful. The completely traditional way. Then the second thing that gets you is actually the beauty of the temple itself. It is in the traditional Nagara style of architecture. And again, we shot out there. Again, I didn't think how it would be completed in 3-4 months, but it was practically all done. The sculptures on the mandapa, it's so beautiful. And the work that I think the trust and of course Chief Minister Yogi's team has done on the infrastructure, it's fantastic. And at the temple. And but what gets you the most is actually the murti itself. Okay, I respect all gods. I respect all religions. I write books on all gods and goddesses. But at my core, and as I'm sure many of you know, I'm basically a Lord Shiva devotee. Yeah. The deepest recesses of my soul only get touched at a Lord Shiva temple. Or at a Hanumanji temple, who we all know is an ansh of Lord Shiva. Right? Where I start crying. This is the first time I started crying when I saw the murti. It is so beautiful. And even if you see it on TV, nothing matches the real murti. And the Arun Yogi Raj? Oh man, what has he sculpted? He has the blessings of Lord Shiva. There's no other explanation. It is at the same moment so powerful and yet so childish that he's a Ram Lalla. He's a child. So you feel protective and awestruck at the same time. How can someone do that in a murti?
it is just, I was crying, and my wife Shivani was next to me. We had the privilege of going up, a little close to the door. We were, doing sashtang, and we got up, and I was crying, and she thought, like, are you okay? Such a beautiful, powerful Jagrut Murti. And this is the first day. Yes. Can you imagine when over many years, so many millions of devotees like all of us, we go out there and we pour our spirituality, our devotion into that temple and into the feet of the Lord. Can you imagine the Jagruti that will emerge from there? This will change Ayodhya, it will change India, it will change the world. I think Yes. Modi ji said it perfectly. Ramji should not be seen as just a fire. He is energy. That was energy. And just look at the energy in Yeah. the skyline of Ayodhya. It's all lit up, and we are seeing firecrackers and a lot of lighting. And all there. of you, come here. That's the message that's going. 24 hours. Ranveer, you had a question for Amish. Amish, you spread the message about Ram's character. What is Ram for you? I think, Particularly after having spent 24 hours in Ayodhya. yeah, and I think the heroes and the gods that we look up to says something about the culture of the land itself. I've lived in the West, I've lived in a few areas, and for 4.5 years I was in the UK, and you look at the, outside of Jesus Christ, who is a humble, or most of the heroes that they put up are those who are conquerors, those who've done perhaps crimes on other countries. And here we look up to Lord Ram, who is the symbol of sacrifice, of grace, of maryada, of self-control. He is our eternal king, and that, of course, says something about Lord Ram. But it says something about our culture as well. What are the values that we look up to? It's one of the reasons I'm such a patriot. I love India so much. There are many things we can improve in India, no doubt. But the values that we cherish, the values that we look up to, the fact that we look up to a god like Lord Ram says something about us as well. So you Yes. expected that such a beautiful temple can be constructed within a few months, I can Very say. short period, yeah. And a temple like this, see, because this has been made, again, we've covered it in detail in the documentary, which will come on NDTV. On 25th at 7:30 p.m. At 7:30 p.m. It's a on all special one. NDTV channels. This is a temple constructed in the traditional way. So modern techniques have been used, modern engineering has been used, but that's only to strengthen the soil, for the infrastructure, etc. But the techniques itself are traditional. So it's stone, it's not concrete and Yes. and No and, iron and used. no iron pillars. Yes. So it'll last 1,000 years. The modern style construction doesn't last beyond 100, 120 years at the maximum, right? It has been made the traditional way. Those kind of constructions, they last, but they also take a lot of time to build. In the traditional way, a temple like this would have taken decades. They got this done in just 3-4 years. My compliments to the government here and to the trust. They've done Larsen an and Toubro, unbelievable right? job. They And were Larsen and Toubro. Sorry, I Yes, should not forget. and- This is an endorsement for Larsen and Toubro, if you can call it that. Yes, and ma'am comes from Egypt. She was among those invited and was present there inside the premises. Remember, dignitaries from 51 countries were sent invitation letters, and you were among them. Oh, yes. I was one of the blessed ones. I'm coming from Egypt. My name is Deepti Singh. Yes, Deepti, tell us, what was the ceremony like, and what is your big takeaway in terms of what are you carrying back to Egypt? Oh, the ceremony was magnificent. It was mind-blowing beyond anybody could ever imagine. Not just, as Amish mentioned, not just the physicality of it, the spirituality. If you see the people, the feel, the energy was so high, and I believe almost all of us were in tears. Not just before entering the temple itself, while the Murti Pran Pratishtha was happening. And we were shown on the screens. And the Prime Minister said that this is the beginning of a new era. Oh yes, he said this is Kal Chakra Parivartan, and we are all looking. And he said so. Ram is not just a temple; it's what he did it, what learning we are going to take, and how we take it further for the better India. And you feel that being in Ayodhya today matters because it's almost like a second Diwali which is being celebrated, and perhaps from now onwards, 22nd will be another Diwali, 22nd of January. That's gonna be fantastic. Yes, it is beautiful. I'm living away from Bharat, but I come very often to Bharat.
22nd January will be next Diwali, that's for sure. But if you see people, look at the brightness in people, you know, just the eyes, look at the eyes, look at the feel. I mean, I have goosebumps. Sheer excitement that is there in the air. And it has reached. And here as well. Yeah, and it doesn't seem to die down. It's not ending. It's only gathering and perhaps increasing with every hour. Amish, talking about the message coming from the Prime Minister's speech, he also appealed specially to the youth to have that special connect. Absolutely. And their role in nation building. No, absolutely. And, you know, to me, again, another lesson from Lord Ram, building a bit on your question. Here was a king, which is why perhaps he is the eternal king of India. Here was a king who put his land and his people above everything else, including his own family. Right? We had another model of kingship, which is called the King Dhritarashtra model, which is sometimes called the Putra Moh model, where deep affection for the child, where King Dhritarashtra essentially put his family and his child above his land and his people. Lord Ram was the exact opposite. And perhaps a lesson we can draw is it only the duty of the king to put his land and his people and his nation above everything else? Shouldn't all of us do the same? Shouldn't all of us also believe that actually the nation is above everything else? Desh Sarvopari. And if we do that, all 1.4 billion of us, we will build an India that Lord Ram would be proud of. That Kal Chakra that he spoke about. And what if you were to sum it up, what exactly will it be? But I thought that was actually a very deep and philosophical point. And actually I started thinking deeper on it. There's an article that's forming in my mind, maybe quite long form, and I will maybe write that down in a few weeks, of what this moment can mean for civilization and for time. Look, India's fundamental way of thinking is radically different from how many other cultures think. We don't think in terms of binaries. Right. You know, black, white, you're with us or against us, you're going to go to heaven, you're going to go to hell. And we are among the last surviving cultures which thinks this way, where we see that there can be good in both, that you can have mutual respect. And if the entire world thinks this way, where the only choices in front of you are not either dominate or somehow survive, it can actually work with mutual respect. That is our ancient and traditional way. I think the Prime Minister was probably referring to that. That's a very deep philosophical lesson, and India needs to speak of that message a lot more confidently to the rest of the world. It's a thing, you know, I'd spoken at the Oxford Union recently in a debate, and I'd made this point out there that much of the rest of the world does think in binaries. We don't realize that because we are so impacted by how the West thinks. That you're either with us or against us. It cannot be that you can be with yourself, you can be with me also. You can have mutual respect. You can respect science, you can respect religion as well. You can be a strong man and you can love and respect your wife as well. There's no either or. You have the choice of doing both. That's an opportunity that India gives. And I think that messaging again of what does it mean to be an Indian right now in other countries. You know, we are seeing celebrations happen all over the world. What all has been planned in Egypt? In Egypt, we have planned that everybody would be sitting together. I mean, this is the plan. Everybody was supposed to be sitting together, the entire community, and celebrate it as a Diwali. And watch the live show from Ram Janmabhoomi, whatever is coming, and celebrate together. Celebrations together. That is again the message of togetherness, oneness. Amish, it's, you know, all encompassing. I'm sorry, let me just explain. I have mullety in my mouth. I'm suffering from cough. This is what is keeping me from coughing away. Sorry, go ahead with your Please question. go ahead. Yeah, so, you know, you will leave Ayodhya tomorrow. You'll be going to another city. You'll be speaking about it. But what is it that you'll be carrying forward? You know, the sheer presence of a person here. What does it feel to be here? You know, the Sanskrit root of the meaning of Ayodhya is the land that cannot be conquered. Yes. Right? Yes. And this was the traditional meaning, and this was the capital of the Raghus. So could not be conquered. I think perhaps we can add, because Sanskrit has this lovely ability to be flexible. It can add
a bit more meanings to it. Maybe this can also mean the land of no war, a land of peace. And I think that is emerging. I see that in the way people across Ayodhya, and I think across India, are celebrating this, of all religions, of all communities. Lord Ram is our eternal king. He is, of course, a Hindu god. I'm very proud as a Hindu, but he's an eternal king for all Indians. And I think that is a message that I'm taking away from here. Amish, you are here in Ayodhya. When we talk about Ram, Ram is known for Ram Raj. So how you see the spirituality with development, infrastructural development? You are here in Ayodhya since last, I think, 24 hours or more than 24. I think the best way to answer that is two Sanskrit shlokas. So one from Acharya Chanakya himself that Sukhasya Moolam Dharmaha, Dharmasya Moolam Arthaha. That at the heart of peace and happiness is dharma. But at the root of dharma is artha. If you don't have wealth or power, we had that same lovely philosophies for many centuries, but we were a land that was invaded repeatedly and we lost repeatedly. Sometimes because of internal disunity. And if we don't have wealth and power, then frankly, you can't speak of your culture. No one listens to your culture. So that's the first point. That infrastructure, economy, security, why it's so important. Acharya Chanakya was right. It is at the heart of everything. The second thing is a lovely Sanskrit shloka which for me defines Ram Raja. Rama Raja Vasi Tvam Prochra Yasvatesharam Nyayartham Yudhyasva Sarveshu. I'll translate, don't worry. Nyayartham Yudhyasva Sarveshu Samamchara Paripalay Durbalam Vidhi Dharmam Varam Prochra Yasvatesharam Rama Raja Vasi Tvam. That you live in the kingdom of Ram. Hold your head high. Treat all as equal. Protect the weak. Fight for justice. Know that dharma is above all. Hold your head high. You live in the kingdom of Ram. That to me represents Ram Raja. Okay, let's speak to some people now, Yes. Ranveer, and Someone Amish. is with me. Yes, He please has go written ahead. something Go ahead. about Lord Ram. Yes, what do you have? Yes, I'm Ashish Anshmali. I wrote these 4 lines on this occasion. जगत में प्राण फूकेगा सकल गुण ग्राम का मंदिर जगत में प्राण फूकेगा सकल गुण ग्राम का मंदिर अयोध्या धाम में जो बन रहा श्री राम का मंदिर गुंजाएगा अखिल ब्रह्मांड में जय घोष समता का गुंजाएगा अखिल ब्रह्मांड में जय घोष समता का प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुष छवि धाम का मंदिर जगत में प्राण फूकेगा सकल गुण ग्राम का मंदिर. You know, that's the beauty perhaps of Ayodhya. Over the last few days that we have been here, Ranveer, there are singers, there are bhajan, Poets. Yes, poets. There are artists right in front of this big art form that we are. What is it? Spirituality that brings out this kind of art form? Yeah, actually, I guess because what is art? Essentially, it emerges from the soul, right? And spirituality and emotions actually touch the Yes. deep recesses of your soul, and art naturally emerges. Art is not something that comes from the rational brain. It comes from the emotional, spiritual half of the brain. Okay, Amish, thank you so much. Thank you. One word to sum up your stay in Ayodhya. 3 words. Okay. Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. much. So, And if I may, Yes. I am a Lord Shiva devotee as well. So Yes. Hara Hara Mahadev. Thank you. Yes. You want to say something? Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Okay. So 22nd of January, that's today, has been certainly inked, especially in the history books. What all happened today? Here's a quick recap of that.
like the proverbial phoenix. Ram Lalla takes his seat. The once-in-a-lifetime moment, a rare and never-seen-before fervour of faith and emotion. The much-awaited Pran Pratishtha of the Ram Lalla idol at Ayodhya. The long wait and months-long preparation culminating in the grand temple opening to herald a new era for India. Shri Ram Chandra Kripalo Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam. Around noon, Prime Minister Modi stepped into the Ram Temple carrying offerings for Lord Ram. Dressed in a golden kurta, teamed up with a cream dhoti and patka, he walked into the sanctum sanctorum of the temple, holding a silver umbrella on a folded red dupatta. The Prime Minister then took sankalp for the consecration ceremony. He was joined by RSS Chief Mohan Bhagwat, UP Chief Minister Yogi Adityanath, UP Governor Anandiben Patel, Mandir Trust Treasurer Govind Dev Giri, Trust Member Anil Mishra at the Pran Pratishtha ceremony. A group of priests led by Lakshmi Kant Dixit performed the ceremony. As Ram Dhun took over the temple and the hearts and minds of the devout. Minutes of rituals and prayers to bring the Ram Lalla idol to life as he took his place as the presiding deity of the mandir. Ram Ram reverberated in hearts as helicopters showered flowers from the sky over the temple. As history was created at Ayodhya, the temple town decked up for the big day. A stream of devotees from not just across the country but across the world arrived in Ayodhya to be part of history. The great civilizational event brought together Ram Bhaks and citizens, rich and poor, from north, east, west and the south under one umbrella. Jai Shri Ram! The event saw big names from politics, corporate India, A-listers from the film industry, from the world of sports, legal luminaries, all celebrating the epochal moment, witnessing history being made. To be part of the big day for faith, unity and spirituality. A day that will define India in the time to come. Ram Lalla calmly smiling in his So you have seen what happened in Ayodhya on the historic day of consecration ceremony, and now Dr. Santosh Kumar Pandey is here. He'll sing a bhajan for us. Santosh ji, क्या गा रहे हैं? आशिरा इस जहां का मिले ना मिले
प्रभु राम जी आपका सहारा सदा चाहिए, चांद चौतारे फलक पर दिखे ना दिखे, प्रभु जी आपका नजारा सदा चाहिए। मेरी धीरी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबतें प्रभु आप ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना कहीं, दिल में आपका इशारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। कंटिन्यू करते हैं हम। This is happening everywhere in Ayodhya. Yes. You have some So we girls. have sisters here who have a song as well to present as we wrap up this special broadcast. मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे गुड़ गई मेरी कहानी से, ना रोको आज दोनों दो चरण आँखों ने पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। So here we wrap up with this song, and we are really very happy and delighted that we are witnessing, the live everything. So we are very happy for that. जय श्री राम।